Cricket Diary with RJ Yuvi. Only on Radio City. Yeah, I'm just genuinely grateful for all this lovely journey. I would request you to look back again. Your first day in the Indian dressing room. You remember that? Oh, That's a huge moment. First day in the Indian dressing room, 2005, October 25th, yeah. Wow. What country was it against? I played against Sri Lanka in Nagpur. And the exciting part is I made my debut in one day as well as test in the same ground, VCA. So, test was in 2006, March. And one day was... Was that the first time you were meeting all these greats of... No. I was blessed because I was playing for Indian Airlines. So I played with UV to everybody and individuals. So I was grateful. I was in the camp. I was a net bowler. I have been watching it. I've been watching the game, and BCCA was kind enough to give us opportunity to bowl to all the legends in 2003. Just before the World Cup, they had a Bangalore camp. So I was the net bowler in the bowling. Who were your first friends in the dressing room? Dressing room, Uthappa is somebody, he's the first cricketer who actually told me, thank you Uthappa, genuinely thank you. Uthappa is the first cricketer when I played for Indian Airlines. After a couple of my bowling spells in Red Bull, he came to me and I was just removing my specs and he said, and he was next to it because I made sure that I sat. I always sit next to him. Then he looked at me, it was in Chinnaswamy Stadium, he looked at me and said, Shree, focus on the game. I think you can play for the country. I can see a lot of test wickets in your arms. I said, are you sure, Uthappa? मजाक छोड़, थोड़ा cricket पे ध्यान दे. I said, okay. So I think Uthappa was, even now, today also, I think Uthappa, Bajipa, all these were some people who have always stood by me. Viru Bhai for that instant. See, also, I think people who and know... Sachin Bhaji, I won't say because Sachin Bhaji is in a league of his own. So Sachin Bhaji has always been there. But उनको तो आप हमेशा सुनना चाहते हो ना, वो बोल रहे हो और आप सुन रहे हो. अरे हमेशा. And a lot of wickets, especially in Test cricket, is Sachin Bhaji's plans. I only executed it, but Sachin Bhaji used to. I don't know how many matches you have seen. So whenever I get a wicket, I sometimes run towards Sachin Bhaji to tell him, Sachin Bhaji, because the plan really worked and execution happened because I worked really hard. But then he had that faith in me that he will execute his plan. For us in North India, it's Diljit also. Diljit, yes, oh man, respect to that man. Bhaji, तुसी great हो. आप पंजाबी म्यूजिक सुनते हो? बहुत ज्यादा यार, बहुत क्या बात कर रहे हो? शिखर हमारा कप्तान है. शिखर is even learning singing. तो मुझे लग रहा है शिखर धवन का कोई वो आएगा अभी एल्बम थोड़ा या फिर कोई सिंगल आने वाला है. भाई मजा आ जाएगा अगर आप मुझे एक पंजाबी गाना कोई अगर आपको याद हो तो. मैं कह रहा हूँ मजा आ जाएगा. दिल ले गई कुड़ी गुजरात की, दिल ले गई कुड़ी. अरे वाह. हम असली पंजाब दे यार. आप चंडीगढ़ से तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा. क्या बोलते हैं वो गन्ने दी विच में टमाटर कितने ऐसा कुछ बोलते हैं. गन्ने दे खेत से. हाँ, गन्ने दे खेत. नहीं रहने दो. नहीं छोड़ना नहीं. सॉरी. नहीं अच्छा, बट आपको क्योंकि हमने पेप्सी का ऐड किया था. तो धोनी भाई मद्रासी बना था और मैं पंजाबी बना था क्योंकि मैं पंजाब से खेल रहा था. सो वो उनका वो था. समझ गया मैं. बट ओके, आपको पता है कोल्ड प्ले की टिकट से महंगी दिलजीत की टिकट है इस बार. 100% यार. कौन है कोल्ड प्ले? वो कोल्ड है. दिलजीत हॉट है. वाओ, सुपर. Do you remember the first day in your dressing room on the bus? क्योंकि वो फर्स्ट जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Yeah, I remember the first day in dressing room. बस ज़्यादा थोड़ा blurry है, मुझे याद नहीं है, पर obviously तुम as a youngster, मैं तो 20 साल का था जब इंडिया खेला था. तो as a 20-year-old तुम जब पहली बार इंडिया का मतलब प्रैक्टिस जर्सी पहनते हो यार, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. अलग ही फीलिंग है. एंड मैं तो मतलब आई थिंक हर कोई लड़का जब इंडिया के लिए पहली बार खेलता है तो वो पहले वो प्रैक्टिस के कपड़े पहन लेता है और आईने के सामने एटलीस्ट 15-20 मिनट स्पेंड करेगा वो. और क्या बात की फिर तब आपने? क्योंकि यार एक सपना एक हासिल करते हो अपना ना, तो you want to kind of live that moment. You want to take it all in. Then you probably wear the match jersey as well. And or I was in the match jersey for probably half an hour. Obviously you want to share that with the people you love. So back then I shared it with my mom and dad. Yeah, it was the first call probably. Yeah, mom and dad and girlfriend first call back then.
Robin Uthappa, 2024 Indian team. The sudden change of the dialect and the emotion also. Do you think the current Indian team now, because I'm actually short of time, I have to cut it across. So, Go for it. do you think the current Indian team is the best in the past 10, 15 years, probably? All formats? Man, it's such an unfair question to ask because eras are different. The evolution of the game is so different. You can't say that it's the best Indian team, but it certainly is Right. a Right there. dominating Indian side, and I think it's because of the kind of bowling we have. Right? I think we see the difference of that a Bumrah plays in the ecosystem today, and the Shamis of the world, the Sirajas of the world today are really, really good with what they do, and I think that's one of the reasons. And not to forget Ashwin, man. Yeah. Oh my God, Ashwin is gold. is the latest. Old money. Yeah, he is. He's something else, man. I think he's he's very quietly gone about his business and shown a lot of resilience. When he came into the side, he came in when Bajupa was at his prime, and he was able to create a niche within that. And today, I think is should and for all intents and purposes should be considered an accomplished all-rounder, because he has shown that he is an all-rounder. And today, I think is one of the best that India's ever produced. Right. And now suddenly the Indian team comes across as not just a batting strong unit, but now the forefront is the bowling also. Do you think that has pretty much changed in the past 5-8 years, India's perception at the world level? Yeah, of course. I think the bowling has been the biggest reason of success for the Indian team, because we were always a very solid batting unit. And I think we will continue to be a very solid batting unit for as long as cricket will be played in the world. But I think bowling will be an ebb and flow. And I think teams that have had solid bowling units, even in the Indian team, in the Indian fraternity, teams that have had solid bowling units have been the teams that have ended up winning world championships. I was just talking to PK and he said दो तरह के लोग होते हैं यार, एक यहाँ से सोचते हैं, एक यहाँ से सोचते हैं, मैं यहाँ से सोचता हूँ, आप कहाँ से सोचते हो? मैं यहाँ से सोचता हूँ, मेरा ये कम चलता है और चलाना भी नहीं चाहता हूँ मैं ज़्यादा. I think I use it only when it comes to a matter of self-respect. पर सिर्फ कॉन्फिडेंस आपने बताया, कॉन्फिडेंस बहुत है, सब कुछ सही है, माइंड गेम है 70%. कोई ऐसा बॉलर बैट्समैन ईमानदारी से जिसको आपका अगले दिन मैच और आप पूरी रात सोचते ही रह गए, इसको क्या बॉल करो? मैं कमाल संगाकारा, वो मुझे ना पहले थकाता था, फिर वो मारता था, और वो इतना जबरदस्त खेलता था कि मुझे उसको आउट करने के लिए 3-3 दफा सोचना पड़ता था कि इसको कहाँ से कवर करूं. विकेट कीपर था, लेट खेलता था, और वो मुझे जैसे ही मैं बॉल करता था तो मुझे वो छेड़ता था, विकी भाई, शोएब भाई, शोएबी, क्योंकि वो मुझे मेरे दिमाग से खेलता था. और जब मैं थक जाता था तो वो मुझे कहता है, अजी भाई यू बॉल 20 ओवर नाउ लुक टायर्ड, नाउ माय टर्न स्टार्ट. तो वो फिर मारता था. तो वेरी गुड प्लेयर, लेजेंड है, उसने बहुत अच्छा खेला है, बट सबसे ज्यादा तंग उसने मुझे किया. बाकी कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है, कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ. मेरे को इंडिया पाकिस्तान राइवलरी आपसे पूछनी पड़ेगी. कोई खास मैच याद है? पहली बार अगर इंडिया पाकिस्तान मैच में आपके सामने रखूं, पहला मोमेंट कौन सा याद आता है कि यार ये तो कभी मिट नहीं सकता, भूल नहीं सकता? मेरा तो पहला मैच ही इंडिया के खिलाफ था जी, एशिया कप 2008 जी. मेरा डेब्यू था और मुझे ये कहा गया था ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट गेम है. क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूँ. इमेजिन करें, इंडिया स्टेडियम भरा हो और मैच इंडिया से हो और मेरे ऊपर प्रेशर हो कि मैच में परफॉर्म भी करना है, और मिसबा वाज कैप्टन. ये तो धमकी ज्यादा लग रही है. हाँ, नहीं धमकी तो नहीं थी, मगर फर्स्ट एंड लास्ट गेम है. हाँ, परफॉर्म करो, क्योंकि मेरा एज थी 30 और एज 30 में मुझे चांस मिला और मिसबा कप्तान था. इसने मुझे कह दिया कि तूने लास्ट ओवर करने हैं. मुझे क्रैम्प पड़ने शुरू हो गए भाई, टांगे सीधी हो गई भाई. लास्ट ओवर, पहला मैच इंडिया के साथ, लास्ट ओवर कह रहा आपको करने पड़ेंगे. आप लास्ट ओवर में ज्यादा अच्छे हो उससे पहले ओवर में. अच्छा, मैंने कप्तान की मानी है और मैंने वो किया भी है. तो वो मुझे कॉन्फिडेंस, देखिए कप्तान प्लेयर को बनाता है, कप्तान ही प्लेयर को खराब भी करता है. अगर वो आपके प्लेयर को बनाना चाहे तो कैप्टन बेस्ट चॉइस है. ग्राउंड में उसने होना है.
उसको पता होना चाहिए कि ये बॉलर कहाँ पे बॉल कर सकता है, किस जगह पे कर सकता है, कौन से अच्छे बैट्समैन को ये कर सकता है, कौन से बुरे को कर सकता है। तो ये कप्तान को अगर नॉलेज हो ना तो कप्तान इज द बेस्ट चॉइस। तो सोचो आप अपने करियर में एक टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब जो भी टेक्निक होती है वो नहीं वैसा चल रहा, कोई अगर दुनिया में कोई अगर एक स्पिनर आप उनसे फोन पे बात करो एज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, या कि भाई ये मुझे सिखा सकता है या इस हार्ड टाइम से निकाल सकता है, वो कौन होगा? देखिए मैं बहुत सारे स्पिनर से सीखा है, मैंने उनको देखा है। जो एटीट्यूड शाइन वॉन का था ना वो एक्सीलेंट था, वो लड़ता था। एक्चुअली वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन पे खेला है, इंग्लिश कंडीशन में बहुत खेला है। उस कंडीशन में उसने वो 700 800 700 विकेट लिए, 700 टेस्ट विकेट, वो एक्सीलेंट। उसका मुझे खेलने का अंदाज बड़ा पसंद था, अटैकिंग अग्रेशन उनके उसके अंदर बड़ा था, और वो कहता था कि मैं कर सकता हूँ सारा कुछ। तो उस अग्रेशन को मैंने बड़ा अडॉप्ट करने की कोशिश की अपने कैरियर में कि यार बस ग्राउंड में जाओ ना तो पता चले कि एक स्पिनर बॉल कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो वो जो रिस्पेक्ट थी ना उसके अंदर, उसको मैंने अपने पूरे कैरियर में अडॉप्ट करने की कोशिश की, पर इतना नहीं मैं कर सका जितना वो उसने किया, बट उसके पास मैं पहुंच गया था। सर इंडिया आप आए हैं, अब तो खैर इंडिया पाकिस्तान के आजकल क्रिकेट बंद है, चलो जैसा भी कहो, बट कोई मेहमान नवाजी का कोई मोमेंट याद है? कोई आपका फेवरेट ग्राउंड, कोई फेवरेट शहर, कुछ लोग? मैं एक ही दफा खेला हूँ इंडिया में, वो भी हम 2013 में वनडे और T20 सीरीज खेलने गए थे। T20 मेरा ख्याल हमारी बराबर हो गया था और वनडे हम जीत गए थे। उसके अलावा मैं 2011 में वर्ल्ड कप में गया था। वर्ल्ड कप में तो हमें बाहर निकलने नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि सिक्योरिटी। 13 में हम गए थे, फिर भी वहां पे हमें 2011 के वर्ल्ड कप में खाना होटल का अच्छा नहीं था, हमें पसंद नहीं आ रहा था। तो वहां पे एक पुलिस वाली थी सरदारनी थी, तो उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि आज अपने घर का खाना खिला दो, तो मैं आपको 2 टिकट दूंगा। उसने कहा टिकट रहने दो, हम मेहमान नवाज हैं, हम आपको खाना खिलाएंगे। वो सिक्योरिटी के अंदर मेरे लिए और मिसबा के लिए 2-3 बंदों के लिए खाना लेके आई थी। वो मेहमान नवाजियत है और क्या है। कौन सा शहर था ये? जहाँ पे हमारा मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान, मोहाली। अच्छा, सेमीफाइनल से पहले? सेमीफाइनल से पहले, एक दिन पहले। अच्छा। खाना खाने से तंग आ गए थे, खाना नहीं मजेदार लग रहा। तो मैंने कहा भाई, कह रही मैं वेजिटेरियन, मैंने कहा आज वेजिटेरियन रहने दो, हमें कोई अच्छी सी कढ़ाई खिला दो। तो उसने वो कढ़ाई खिलाई थी, उसको मैं ये सामने भी उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने बहुत मजेदार हमें खाना खिलाया था। अरे वाह। क्रिकेट है, देखो एक ने जीतना एक ने हारना है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है स्पोर्ट्स। लेकिन यह है कि मज़ा आया, एनवायरनमेंट जो सी, जो लोग इत्थे आए सी, और जो मेन जो मकसद यही है ना कि लोग इंटरटेन हो। और पाकिस्तान इंडिया का मैच तुहानू पता कितनी वैल्यू रखता, चाहे वो इंटरनेशनल मैच होए करंट प्लेयरां दा, चाहे वैटरन प्लेयरां दा होए, तो मेरे ख्याल से एक जैसी वैल्यू होंदी है। तो एक अच्छी एंटरटेनमेंट है। तो बस थोड़ा अफसोस भी होंदा कि सिर्फ ICC इवेंट ही नजर आते हैं इंडिया पाकिस्तान 2012-13 तो बाद। तो अगर सीरीज भी हो जाए नाल, तो उस तो मजा की है दुनिया जो वेट करती है। तुहाडे सामने है जिन्ने इवेंट होए ने, एशिया कप दे, वर्ल्ड कप दे, इंडिया पाकिस्तान दे, तो लोग जिथे मर्जी होन फुल हाउस होता है। तो मेरे ख्याल ना बड़ी अच्छी। महेंद्र सिंह धोनी हैज बीन आवर बेस्ट कैप्टन, वो विकेट कीपर ने की विकेट तो पिछे थोड़ा जिहा बेटर हो जाता है, क्योंकि तुहानू फील्ड इस तरह दिखदी है, थोड़ा गेम वैल्यू ज्यादा होंदी है विकेट तो पिछों। देखिए वो बिल्कुल सही है, और विकेट कीपर नू चारों तरफ नजर आ रहा होंदा है कि फील्ड प्लेसिंग कितने होनी चाहिए है, और कप्तान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और MS धोनी तो खैर होंदा तो कोई मैच नहीं है जो उन्हें कैप्टनसी कर दी थी इंडिया से और दुनिया च। मेरे ख्याल से बड़े बड़े जड़े यंग लड़के ने उन्होंने से बड़ी बड़ी मोटिवेशन है। अगर किसी ने कप्तान बनना है, अगर कैप्टनसी करनी है, तो MS धोनी अल देखे। क्या डिफरेंट लगता है भाजी आपको उनका? हम तो सोचते रहते बड़ा काम और डाउन टू अर्थ और रिलैक्स अपने आप को देखो ना कि वो बिल्कुल ही रिलैक्स में, तो टेंस देखता ही नहीं है, और बिल्कुल वो अपने आप ने रिलैक्स छड्या होंदा है। तो अच्छी चीज़ है, फिर इसलिए वो कामयाब भी है। और मेरे ख्याल से वो सिर्फ ऐसा सोच रहा होंदा है
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਪਲੇਸਿੰਗ ਬੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫੀਲਡ ਪਲੇਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੇਮ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ MS ਧੋਨੀ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੀ 4 ਬੋਲਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਾ ਗਿਆ T20 ਦਾ ਵੀ 50 ਓਵਰ ਦਾ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਵੀ IPL ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦਫੀ ਜਿਤਵਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵਧਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਫੀਲਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਨਰਸ ਲੰਚਸ ਲਈ ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੌਤਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੈਂ A ਟੀਮ 2001 2 ਚ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ A ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖੇਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ MS ਧੋਨੀ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਰਾਇਨਾ ਯੂਵੀ ਭਾਜੀ ਬੱਜੀ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਹੋਟਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਜਾਂ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ देखिए नो डाउट मैं तो देखा कि क्रिकेट शुरू की थी तो ग्रेट सचिन पाजी क्या प्लेयर्स थे और क्या रोल मॉडल थे उस वक्त और हुण भी उन्होंने मैं कोई जोड़ ही कोई नहीं है लेकिन उस वक्त जो मैनू लगता नहीं सी कि उन्होंने कोई जगह लै सकेगा उन्होंने तक कोई पहुँचेगा लेकिन मेरे ख्याल ना जो विराट कोहली ने करता वर्ल्ड क्रिकेट से अपने इंडिया से मेरे ख्याल से कोई नहीं घट ही होएगा सचिन का तो 10 साल बाद आ गया 15 साल बाद आ गई रिप्लेसमेंट विराट कोहली ਨੂੰ बीट करने से मेरे ख्याल ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ बनना पैना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਫਿਟਨੈਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੰਗਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਪਲੱਸ 100 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੰਗਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2008 ਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ IPL ਚ ਪਹਿਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ Bangalore, Chennai or Rajasthan, which has been your favorite franchise? Ooh, that's a tough one. I had an amazing time in Rajasthan, just the one season. I played a couple seasons in Chennai and a couple seasons with Bangalore. Dhoni, amazing. I was with Rahul Dravid. So listen to these names. Rahul Dravid in 2013, cricketing legend. Dhoni, 2014-15, I think it was. And then Kohli, 16-17. You want me to decide from those three? That's tough. I can't. 3 legends of the game. Amazing dressing room. Amazing experiences with these guys. You hear of Dhoni, for instance, and what he's done. He's such a good guy, always approachable, always welcoming, always giving you advice. He doesn't talk a lot, but whatever he says, it's like gold nuggets. Very, very special player. Virat, same thing. He's intense, and you get that intensity from him, and that wanting to win, that drive and passion. Something that I really respect and admire about him. And Dravid is cool and calm. Never feels under any sort of pressure when you're around him. Yeah, 3 absolute legends of the game. Then one final question. Why doesn't RCB get to win? That's a good one. I have no idea. They always have a... You've played leagues across the world. You know Bangalore is a very good side on paper. I think it has to do with playing at Chinnaswamy and the team not being able to make that a fortress. So if they can win more games at home, if you look at Chennai, they're unbeatable at home. Mumbai, they win a lot of matches at home. Their win percentage, and those are the 2, franchises who have won the most. So I think you need to make your home base a base where you win a lot of your matches. So they need to get bowlers who can perform well in Chinnaswamy, because that's where you play a majority of your matches. You play half your matches at home. So if you're winning more matches at home consistently, you're going to get to the playoffs more. You have a better chance of winning. But unless they do that. But having said that, Chinnaswamy is one of the most difficult pitches to bowl on. Small, guys hit 6, it's out of the stadium, it's a good surface. So they need to find players who can perform well with the ball there, win more matches there, and they have a very good chance. Well, I have to just ask you, when was the last time you bowled 4 overs?
No, actually, I won't say when the last time I bowled was, because in South Africa is winter. We just finished the summer. So I do play club, which is Sunday league. There and there if there's a need for it anyway. But otherwise, yeah, I'm still running around with kids and then making sure that they grow into the sport that we all loved and played. Yep. Makhaya, is 20 over format your favorite format? You know, when you talk about a format of any kind, I think cricket is one of the greatest things that has been created to all humanity. You know that India, they live, they eat, it's cricket. You know, so for us as outside countries, this is a part of an opportunity, you know, to play different sport, because in South Africa, favorite sport is rugby. Or football. You know, when it comes to the black community. You know, so when you get to play something else, you know, cricket, it became one of our greatest thing ever. Who is the hardest to bowl, Brandar or Tendulkar? I would say both of them. If someone can score 501, you know, you can't say that it's easy to bowl to him, especially as a left-hander. Tendulkar, you can't bowl short, you can't bowl half volley, you can't bowl anything that is outside off stump. Even if it's short, I will put it away. So you need to think in both of them when you bowl to them. What do you think if you would be bowling to Virat Kohli or Rohit Sharma? Who would be easier? I think I'll get hold of them. Both of them? Oh, yeah. Yeah, if they had to be in our prime time, sorry. Yeah? Sorry. No, let's be fair. Let's be fair, yeah. Yeah. Who would you pay to watch, Kohli or Sharma, Rohit Sharma? Wow. Can they bet both? You have to pay to see one of them batting. I think from my point of view, I would think from the stroke player point of view, I'll take Virat Kohli. For the person that I know that he can attack you and hit you anyway, you can bowl short ball, you can bowl anything. Of course, Rohit Sharma, his skills put him on that. But You've still taken both of them. Of course. One. I can't pick You one. only have a ticket for one of them. What? If they put millions of red and both of them are in good form, Yeah. I would take Virat Kohli. Virat Kohli? If they are in good form, I'll take Kohli. कोई यादगार मोमेंट है इंडिया के टूर की? बहुत सारी हैं। मैं आईपीएल खेलने गया, वो हम राजस्थान रॉयल्स से जब हम चैंपियन हुए फर्स्ट टाइम, वो बहुत ज़्यादा अच्छी यादें हैं। बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग भी होती थी, और जब भी इंडिया गए और सडनली आप होटल से बाहर आ गए और कहीं स्ट्रीट में नज़र आ गए, तो विद इन सेकेंड्स थाउजेंड ऑफ लोग जो हैं वहाँ आपके इकट्ठा हो गए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त फाउंड मेमोरीज हैं जो कि इन यंगस्टरों ने नहीं देखी, और इसी तरह फिर हम पे प्रेशर भी कम हुआ कि हम बार बार वो हमारे पास आते रहे, हम उनके पास आते रहे, तो हम हमारे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और जो है ना वो, और आपकी जो थिंकिंग होती है, आपकी जो और कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। एक बॉल पे 1 रन चाहिए, आप फील्डिंग कर रहे हो, किस बॉलर को, वर्ल्ड ओवर पूछ रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी वर्ल्ड में किसको आप बॉल थमाओगे? एक बॉल पे 1 रन चाहिए सामने वाली टीम को। मेरे ख्याल से देखें, अगर एक बॉल हो और वसीम अकरम हो, तो मेरे पास चॉइस हो तो मैं वसीम अकरम को जो है बॉल। तो वसीम अकरम या जसप्रीत बुमराह? अपनी वसीम, देखें हम जसप्रीत बुमराह में से कुछ नहीं ले रहे, लेकिन वसीम भाई ने जिस एरा में क्रिकेट खेली है, इसी तरह जब सचिन तेंदुलकर ने जिस एरा में क्रिकेट खेली है, हम विराट कोहली से कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से विराट कोहली बहुत उनसे आगे चले जाएंगे, लेकिन जो ग्रेट्स इनके हैं, जो वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कंपेयर तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर दौर में जो ये क्रिकेटर्स हैं, ये सुपर डुपर स्टार्स हैं सारे। जो हमारा एरा था तो हम अपने एरा में सुपर डुपर थे, इसी तरह अगर आज की एरा की बात करें तो ये सब है, तो हम इनसे कुछ भी नहीं ले सकते, और मेरे ख्याल से हमें कुछ लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कंपेरिजन हमें भी नहीं करना चाहिए।